چې په سوال کې جواب پروتي هغه لیډینګ دی. Question will start from why, where, when, where, who. These are non-leading. Okay, so I'm sure you have learned a lot. So we will be, as I said, that this is advocacy. This is supposed to be a one-year course, vocational course. So we cannot learn everything in lectures, but at least we can have something. Now to continue with what we left unfinished yesterday, we said that advocacy comprises of two parts: functional advocacy and persuasive advocacy. In functional advocacy, you are impartial officer of the court. You present facts, you are in mild tone, and you are not emotional. In persuasive advocacy, you are partisan advocate. You represent a party, you protect his interests, and you give your arguments, your submissions, your points, your grounds, and your tone modulation is different. You are a bit emotional and so. Now, moving forward, we use the term competent. فلان کے competent وکیل ہے, فلان کے competent ہے. This has although relationship with code of conduct, and I was stunned because when we started learning code of conduct in England, the first thing was that an advocate should be competent. And I said, what? We have competent advocates, we have very competent advocates, and we have incompetent advocates. So though we are not supposed to give lecture on code of conduct, but still it's having relationship with advocacy. Competent satawai. Anyone in any. अच्छा, जिसको कानून का भी पता हो, जिसको वाक़यात का भी पता हो, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हों. और ब्रिलियंट क्या होगा? ब्रिलियंट क्या होगा? Yes. Yes. Okay. Anybody else? Acha. Competency is the basic requirement for doing any professional job. Basic requirement. While here it is not a basic requirement. So, competency is something which can be acquired, and this is sometimes God gifted. So this is required, and this is not required, but if there, it is good. तो कॉम्पिटेंसी ये है कि आप किसी प्रोफेशन में हो और आपको बेसिक रूल्स ऑफ द गेम का पता हो. And what is competency? Competency means having the requisite standard of not doing mistakes. आपको इतना पता हो कि आप मिस्टेक्स ना करें. ठीक, मैं आपको मिसाल दूं. मसलन, I was watching a documentary on Discovery Channel, 10 most dangerous roads in the world. And on number 2, Lawari Top, leading to Chatral. Now we have the tunnel. Previously it was Lawari Top. It was the second most dangerous road in the world. And I watched that a driver, illiterate driver,
having 1960 model Bedford truck, manual transmission, no hydraulics, nothing, and he could carry that truck overloaded through Lawari Pass. Now this is competency or this is brilliance? This is brilliance. Because he does not have any training. तो वो ब्रिलियंट ड्राइवर वहाँ से ट्रक तो गुजार सकता है, लेकिन कभी कभार स्ट्रेट रोड पे वो फास्ट गलती कर लेता है, फास्ट गलती कर लेता है। इसकी बजाय आप लंदन की स्ट्रीट्स पे जाएं, तंग गलियों में डबल डेकर बस एक लड़की चलाएगी, ठीक, और वो आंखें बंद करके बस चलाएगी और कोई एक्सीडेंट नहीं करेगी, लेकिन ये वाला काम लवारी वाला नहीं कर सकेगी, बिकॉज शी इज कॉम्पिटेंट। वाई इज शी कॉम्पिटेंट? शी नोज रूल्स ऑफ द गेम, शी नोज, बिकॉज शी हैज बीन ट्रेन्ड फॉर दैट। ये गॉड गिफ्टेड है, एक्सपीरियंस से बढ़ जाता है, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो देयर इज नो टर्मिनोलॉजी लाइक मोर कॉम्पिटेंट or very competent. You are either competent or you are incompetent. So a liar is supposed to be competent. What is competency? कि आप गलतियां ना करें। इधर हमारे मसलन नेशनल लेवल पे हमारे बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। वो वकील इम्प्रेस करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स को और फुल कोर्ट को, लेकिन कभी कभार फाश गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमारा एज अ होल नेशन का कॉम्पिटेंसी का मसला है। ब्रिलियंट लोग बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है। मेरा भतीजा सर्जन है, डॉक्टर अब्बास, उसका वो वायरल हुआ है सोशल मीडिया की, मैं फ्री करता हूँ। तो वो कह रहा था कि अमेरिका से एक डॉक्टर आया था, प्लास्टिक सर्जन, और उसने हमें 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी, और वो सर्जन बताता था कि मैं जो प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ वही बिल्कुल उसी तरह मेरा शागिर्द भी करता है, क्योंकि ये हम तरीके से करते हैं, इसके अपने मैनुअल्स हैं, उसी पे करते हैं। यूके में जो लीडिंग, वहाँ पे यूके में लीडिंग लॉयर नहीं होता, लीडिंग फर्म्स होते हैं। आप अच्छे फर्म को कह देते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है कि किसी को भेजें, और वो सारे कॉम्पिटेंट होते हैं। सो दिस इज समथिंग everyone can acquire, because these are rules of the game, whether it is oral advocacy, whether it is examination in chief, whether it is cross examination, there are always rules of game. Cross examination के तनाजुर में मैंने इसलिए पूछा कि what is leading, we don't know, we are confused. What is potentially leading? What is open-ended question? What is closed-ended question? तो ये आप this is related to competency. The other things, how to win a case, this is brilliance. So a lawyer is supposed to be competent. If it is brilliant, that's good. You are not supposed to learn and memorize CPC, CRPC, judgments. You can find that is not, but you should be competent. You should know the basic rules of the game. So functional advocacy and persuasive advocacy, again these are related to competency, and these are useful tools for you. आपने ये फिक्रमंद नहीं होना कि यार ये तो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, ये मैं तो 20 साल लगाऊंगा तो सीख लूँगा। नो, इंतहाई आसान चीज़ें हैं जब आप रूल्स ऑफ गेम जान लें। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारा इतना है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। We are in, again going back to the arguments, functional advocacy and persuasive advocacy. This is what? Breathe. Breathe.
कल हमने कहा था कि आपका टोन किस तरह होना चाहिए, आपका पोस्चर किस तरह होना चाहिए. आइडियली यू शुड बी स्टैंडिंग ऑन 90 डिग्री एंगल. लेकिन 90 डिग्री में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होने की वजह से कभी कभार झुक जाते हैं पीछे की तरफ. सो यू शुड लीन अ बिट फॉरवर्ड. It should be 95 or 100 degree angle. In functional, your tone is mild. In persuasive, your tone is a bit louder, a bit loud and emotional, a bit sentimental. Now, breathe. Breathe, सांस लेना. This is one of the most effective tools of advocacy. इंतहाई ज़रूरी है. और एक हो, और हमने वो भी कहा था कि किस तरह स्लो मोशन में आना है. शायद सारे नहीं थे कल. स्लो मोशन वाला भी इंतहाई ज़रूरी टूल है, लेकिन ब्रीथ उससे भी ज़रूरी है. ब्रीथ. व्हेन अ जज आस्क्स यू अ क्वेश्चन, सो डोंट जंप straight away into the answer. Breathe. So a judge asks in a criminal case, what about the FSL? So I breathe. Your Honor, it is positive. Breathe. क्या फ़वाइद होते हैं इसके? बहुत सारे फ़वाइद होते हैं. First of all, you get a pause, you get a chance to think over the query and give proper answer. ये इंतहाई ज़रूरी फ़ायदा है. दूसरा, लंबी सांस लेने से ऑक्सीजन चला जाता है ज़्यादा लंग्स में और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है दिमाग को. आपका एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और दूसरा, इसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है बेंच पे. हालांकि ये आसान काम नहीं है. ये तो हम यहाँ पे कर सकते हैं. जब जज के सामने डाइस पे हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं खुद बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ. ज़माना बखपल है जज अक्सर रहो ज़मियारा ज़हम दाद वदर ज़ाय को पकी ब्रीथ पका रहो मिन को खुदा डेर ज़रूरत है. ब्रीथ. Even in the time of submissions during arguments, ब्रीथ का असर इंतहाई ज़्यादा होता है. वो राइटर्स ने लिखा है कि कभी कभार हमारा ख़दशा ये होता है कि हमने अगर वक्फ़ा ले लिया छोटा सा, तो जज या हमें ठोकेगा या कोई और इंटरवीन करेगा और मुझसे जगह लेगा. इस तरह कभी नहीं होता. बी कॉन्फिडेंट. तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर्गूमेंट्स कर रहा हूँ. आर्गूमेंट्स के दौरान भी ब्रीथिंग इंतहाई अच्छा असर डालती है. मसलन मैं कहता हूँ कि जनाबी वाला, इस बंदे को दिन दहाड़े वालिदा के सामने कत्ल किया गया. ब्रीथ. और ये अकलौता बेटा था उनका. बजाय इसके कि मैं कहूँ कि इसको दिन दहाड़े कत्ल किया गया और ये अकलौता बेटा था. फ़र्क आता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है. मैं ब्रीथ. So the judge will put the pen and he will get attentive. इस ब्रीथ की वजह से, इस पॉज की वजह से जज और अटेंडेंस और बिलियंस का हर प्रोफेशन में है. हर प्रोफेशन में. मैंने आपको मिसालें दी लॉ फर्म्स की कि आप फर्म को वहाँ पे केसेस देते हैं, वकील को नहीं देते, और एवरी काउंसिल इज़ कॉम्पिटेंट. सेम इज़ विथ मेडिकल प्रोफेशन. हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं. मसलन पाकिस्तान का एक डॉक्टर यूएस में जाता है तो यूएसएमएलई एग्ज़ाम पास करना होता है, तो उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती. बेसिक नॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस उनको सिखाए जाते हैं. तो वहाँ पे सारे डॉक्टर्स तकरीबन एक जैसे होते हैं. यहाँ पे इंतहाई सीनियर डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, बेहतरीन सर्जरीज करता होगा, लेकिन कभी कभार एक सिंपल वो क्या कहते त्रिखी तसवई स्प्लीन हाँ इंतहाई सिंपल है. गाल ब्लैडर स्प्लीन तोड़े तो गाल ब्लैडर सर्जरी में उससे फौत हो जाएगा मरीज़. फाश गलती करेगा क्योंकि वो ब्रिलियंट होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा. और कॉम्पिटेंट का कसूर हमारा नहीं है. सिस्टम में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए चीज़ें नहीं हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड.
courtesy. Courtesy समझते हैं आप? We hear the term courteous. To be respectful to the court. To be respectful to the court. This is courtesy. ये बार काउंसिल का हमारा जो है बार काउंसिल एक्ट के पीछे उधर लगा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉयर्स. उस पे लिखा गया है कि लॉयर्स, द बार्स, they shall strive for the independence of the judiciary and will protect the judges from undue criticism because judges cannot defend themselves. So कोर्ट के दो हिस्से होते हैं, ऑफिसर who is the counsel and presiding officer who is the judge. So you are integral part of the court and maintaining decorum of the court is your responsibility. So this is the basic rule. Now courtesy goes ahead of that. ये हम सुनते हैं एक proverb है कि many hard cases have been won by courtesy and many easy cases have been lost by rudeness. Courtesy का मुखालिफ क्या है? rudeness होता है. आपने एक चीज़ नोट की होगी या नहीं कि मोशन में courteous वकील को ज़्यादा तंग नहीं किया जाता और जो ज़्यादा courteous नहीं होते उनको ठीक ठाक किया जाता है क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, जजेस इंसान होते हैं. तो बेशक मेरिट्स को वो वायलेट न करते हों लेकिन इन चीज़ों का असर ज़रूर पड़ता है ओवरऑल प्रोसीजर पे, ओवरऑल कोर्ट केस मैनेजमेंट पे, केस मैनेजमेंट की हद तक होता है असर इन चीज़ों का. नाउ क्योंकि 10 मिनट है नमाज तक, तो मैं जो कल हमने 1 घंटा किया था कि फंक्शनल एडुकेसी, परस्यूएसिव एडुकेसी, कॉम्पिटेंस, ब्रिलियंस, कर्टसी एंड ब्रीथ, इस पे मैं आपको करता हूँ कि किस तरह इसका प्रैक्टिकल डेमो किस तरह होगा. फॉर एग्जांपल मेरा तो इरादा ये था कि पूरा दिन सेशन हो और मैं आपको दूँ रीडिंग मटेरियल की ये केस है, एक जज होगा, एक विटनेस होगा और किस तरह वो होगा प्रैक्टिकली, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा. एक दिन एप्लीकेशन पे किस तरह बहस होगी, पूरा दिन एग्जामिनेशन इन चीफ पे और एक दिन क्रॉस एग्जामिनेशन पे वो केस. तो वो खैर है किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं जाते जाते रफली आपको एक आइडिया दूँ दोनों का. फॉर एग्जांपल आई एम आर्गुइंग एन अपील फ्रॉम accused convict side. Accused convict was awarded, he was convicted under section 302 PPC and subsequently sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 1 million to be paid as compensation to the legal years of the victim. Now I'm arguing that. So first of all, what part of art education it would be? Functional है, मैं facts रखूँगा. अच्छा, तो functional में, so I start. Your Honor, this is an appeal against conviction and sentence in case FIR number 14, police station Al-Puri, registered on so and so under section 302. Read with section 34 PPC. The accused appellant was arrested, put to trial and convicted under the above provision and sentenced to life imprisonment coupled with fine of Rs 1 million. You are noting that my tone is mild here. So the judge asks, judge तो इतना इंतज़ार नहीं करता ना खाली मैदान. So judge asks, has there been any recovery? Yes, Your Honor. Recovery of, there is alleged
recovery of weapon. या आप ये कह सकते हैं, yes your honor, a recovery has been attributed to him. तो आप उसका जवाब भी दे देते हैं और उसके इग्नोर. अगर मैं यहाँ भी कहूँ यू ऑनर वो तो 2 साल बाद ये अरेस्ट हुआ है, कहाँ पे लोग रखते हैं, तो वो एनाय करता हूँ मैं उसको, क्योंकि इस वक्त ये वो फैक्ट्स लिख रहा है, उसको जजमेंट लिखना पड़ेगा आगे, तो वो फैक्ट्स लिख रहा है. यहाँ पे उनके साथ न उलझें. इसका ये मतलब नहीं है, अगर मैं कहूँ कि रिकवरी हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू हिम, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको मानता हूँ. ये तो रिकॉर्ड है, ये फैक्ट्स हैं. ओके, रिकवरी ऑफ वेपन हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड. ओके, जज अगेन आस्क्स व्हाट अबाउट द एफएसएल रिपोर्ट. यू ऑनर इट इज एज पर रिकॉर्ड इट इज पॉजिटिव. रिकॉर्ड के मुताबिक पॉजिटिव लिख देता है. ओके, 2-3 चीज़ें. ओके, आर देयर आई विटनेसेस. योर ऑनर यस, 2 आई विटनेसेस आर देयर. पर FIR 1 was abandoned being unnecessary. आगे जब ज़्यादा प्रोफेशनल जज हो तो वो कहेगा what has been made the basis for conviction. कन्विक्शन किस बुनियाद पे की गई. ओके यू ऑनर, confession coupled with recovery of weapon, positive FSL report and previous enmity. Okay, now start. FIR रीड कर लूँ. अगेन मैं माइल्ड टोन में FIR दूंगा, क्योंकि आगे स्टिल आई एम इन फंक्शनल एडवोकेसी. अच्छा, फिर जज साहब पूछेगा कि आपका कोई रेलिवेंट पढ़ाएं बस बगैर. हाँ जनाब, मैं सिर्फ ये एक चशमदीद गवाह है, मैं उसका पढ़ता हूँ, एक कंप्लेनेंट का पढ़ता हूँ और एक आईओ का बयान पढ़ूँगा बस. बाकी तो मुरासला के हैं, ये कोई मोने. अच्छा, आते हैं कंप्लेनेंट पे. कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ. अगेन आई एम इन फंक्शनल एडवोकेसी. कंप्लेनेंट का बयान पढ़ते हुए मुझे जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, एक हमने कहा था कि स्लो मोशन में कब जाना है. मैंने आपको मूवी की मिसाल दी थी ना, कि जो क्लाइमेक्स होता है वो डायरेक्टर स्लो मोशन में करता है. तो मैं करता हूँ कि बयान क्या कि ये दुरुस्त है कि मैं स्कूल टीचर हूँ, ये दुरुस्त है कि वो है, ये दुरुस्त है कि मैं साईं विजेता यहाँ पे नहीं हूँ, मैं ज़गरीब मालिक हूँ, ये है वो है, ये है वो है वो है. ये अभी काम की बात आ गई. ये दुरुस्त है कि बवक्त वक़ूआ मैं खेतों में खेती बाड़ी में मशगूल था. ये आप सिर्फ स्लो में कहते हैं, अभी आप पॉइंट्स नहीं दे रहे, लेकिन जज से वो आप उसका अटेंशन उसकी तरफ मबजूल कराते हैं. ठीक, इसी तरह आप एविडेंस लीड करते हैं. फिर जज साहब या कहेगा या आप खुद जाएंगे, जज साहब कहेगा कि अपने पॉइंट्स दे दें, या आप खुद अपने पॉइंट्स दे देंगे. नाउ यू ऑनर, एज आई सबमिटेड, द बेसिस ऑफ कन्विक्शन फॉर दिस केस हैज बीन द कन्फेशन. Now I invite your lordship's attention to the confession so recorded by the learned magistrate. Your Honour, as per the consistent case law, some reasonable time is to be given to the accused for thinking over whether to confess or not. In some judgments it is 1 hour, in some at least 30 minutes. यहाँ पे जनाब नोट फरमा लें, सीधा उनको अंदर दाखिल किया गया है. टोन मेरा मुख्तलिफ हो गया. टोन मेरा मुख्तलिफ हो गया बिकॉज आई एम नाउ इन परसुएसिव एडवोकेसी. वहाँ पे फैक्ट्स मैं दे रहा था इम्पार्शल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के तौर पे, यहाँ पे मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ. अच्छा, मजीद यू ऑनर, क्वेश्चन नंबर, look at the question from line number 8 from the top, put to the learned judicial magistrate. He says that ये दुरुस्त है कि बवक्त कलमबंदी बयान मुल्ज़िम दीगर फौजदारी मुकदमात की समात भी जारी थी. Now, Your Honor, as per the law, all police officers should be out of court while recording confession. जब यहाँ पे और जारी थी तो इसका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे.
So what is the value of this confession? Pause lene. I mean, functional. Now, Your Honor, my second point, coming to the alleged recovery of weapon. As per record, and it is the point of the prosecution and has been made basis for conviction as well, that the accused remained at large. He absconded for 2 years. अच्छा जनाबी वाला ये, does it appeal to a prudent mind कि मैं 2 साल मफरूर रहूं और 2 साल तक वहाँ पे मैं वेपन ऑफ ऑफेंस रख के छोड़ जाऊं? वो wouldn't it amount to concocted recovery? तो ये उसमें परसुएसिव में आपका टोन, आपका मॉड्यूलेशन, आपका पोस्चर, सब कुछ तब्दील हो जाता है. तो जब वहाँ पे फैक्ट्स में मैंने 2 नंबरी नहीं की, जज का कॉन्फिडेंस गेन कर दिया, तो यहाँ पे वो मुझे बेनिफिट कर रहा है. जज मुझे ठोकेगा नहीं, मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा, और एक लॉजिकल फ्लो में चीज़ें आ रही हैं. ठीक. तो फंक्शनल और परसुएसिव का ये जो गोरों ने 600-700 साल तक इन चीज़ों को किया है, तो वैसे नहीं किया. इसके फ़वाइद हैं आपके लिए काम आसान करने के लिए. सो नेवर मिक्स्ड. इसका लेसन 2 दिन हमने जो 2-2 घंटे किया, इसका लेसन क्या है? अगर मैं आपकी तरह होता और मैं यहाँ से जाता, तो मैं कम से कम ये करता कि एडुकेसी के 2 पार्ट्स हैं, फंक्शनल और परसुएसिव, और दोनों को इंटरमिक्स कभी भी न किया करें. दिस इज लेसन ऑफ दीज 2 डेज. तो नमाज का वक्त है मेरे ख्याल से. न ब्रीच की, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट खिलाफ तो खुद दी रूल्स ब्रीच न की, कोड के दन न ब्रीच न की क्या ना. ठीक है. हाँ, यो चल कवाला शे आइडेंटिफिकेशन परेड अगर रिपोर्ट प्रो तय और तरवाड़ा वसले तालीम याफ्ता है बाबा ददी 12 की सवे. दिस इज नॉन लीडिंग. दिस इज नॉन लीडिंग. लका व्हाट न शुरू की, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग है ना. ठीक है. दिस केले शे होता दाना शे वेला जिस्ता सरचार अभी तक कड़ी दा या द दिन या लीडिंग के खतरनाक है तो औरत वेची सप जेल की दिदाई दिदले दे द लीडिंग शो द डेर खतरनाक बे लीडिंग शो का ना. नो क्रॉस एग्जामिनेशन की जिता एग्जामिनेशन चीफ की जिता लीडिंग के नो त इलीगलिटी के क्रॉस एग्जामिनेशन किस्ता पल मर्जी था लीगली. क्रॉस एग्जामिनेशन की लीगली whether you lead or you don't, you are not breaching any law. But what should be the practice in cross में practice ये होगा, lead. सिर्फ आपने लीड करना है क्रॉस में. अगर आपने लीड न किया तो अपना केस बर्बाद कर दिया. सो नेवर आस्क हु, वेयर, व्हेन, विच, व्हाट, व्हाई इन क्रॉस. पक्रॉस के तासड़ी तो हुए छे बाबा सो कसानो आपको वाला अपॉर्चुनिटी और करता था आपको वाला एक्सप्लेनेशन मुकोर करा तब सजेशन पर शक्ल के. अच्छा, साइंटिफिक करने का तरीका क्या है चीज़ों को आसान 1 लाइनर में. आपका क्रॉस क्या होगा? किसी गवाह को आपने ये साबित करना होगा कि इसकी नज़र कमज़ोर है और ये इसको ठीक नज़र नहीं आ रहा था. दूसरे को आपने ये साबित करना होगा कि इंतहाई सच्चा और ठीक और क्रेडिबल है लेकिन इसका हाफिज़ा कमज़ोर है. तीसरे को ये साबित करना होगा कि ये गलती पे है, ठीक क्रेडिबल बंदा है लेकिन गलती पे है. तो आपने केस थ्योरी बनानी होगी और आपने फिट करना होगा हर गवाह को उस केस थ्योरी में. तो आपने आपका क्रॉस क्या होगा? केस थ्योरी आपने बनानी होगी. आप केस थ्योरी ये होगी कि आपने इस केस में फाइनल आर्गुमेंट्स जज के सामने क्या करने होंगे. FIR जो सड़े पूरी अवल न और पता लगी क्या ना
Chizaba pati ki final argument sakoma. Dasta case theory shwa. What is cross? Your final argument. Your final argument split into leading questions. This is cross. Very, very simple. Very simple. जो आपका फाइनल आखिरी आर्गुमेंट्स होगा, जो आपके पॉइंट्स होंगे, उसको आपने स्प्लिट करना है क्वेश्चंस में और लीडिंग क्वेश्चंस में उसको पेश करना है. दिस इज क्रॉस. तो अगर मैं कहूँ कि आइडेंटिफिकेशन की केस में मसलन बूढ़ा गवाह है, उसकी नज़र कमज़ोर है और केस मैं ले लेता हूँ, तो मुझे क्रॉस करना होगा. तो मैं फाइनल आर्गुमेंट मेरा क्या होगा कि यार ये तो बंदा गलती पे हो सकता है. ये मेरा फाइनल जी हाँ, ये मेरा जज के सामने आर्गुमेंट होगा, आखिरी आर्गुमेंट. तो उसके लिए ये हम कह सकते हैं कि उसका पहले उससे पूछा जाए या हमें पता होगा कि उसका जो एज है, मतलब वो 70 प्लस है, इस तरह है, फिर वो चश्मा यूज करता है, इस तरह की चीजें, तो उस पे वो शेक होगा कि ये मतलब ये गलती भी हो सकती है. गलती भी हो सकती है, हाँ हाँ बिल्कुल. वो पुलिस रिकॉर्ड में तो और भी चीज़ें होती है ना, 161 बयान होता है, ये चीज़ें होती है, मद रिपोर्ट्स होती है, तो बहुत सारा मटीरियल हमारे सामने होता है, हम जान चुके होते हैं एविडेंस के हद तक कि केस क्या है. तो एक बूढ़ आइडेंटिफिकेशन का केस है, रिकग्निशन का नहीं है. वो बूढ़ा गवाह मुल्जिम को जानता नहीं, लेकिन ठीक ठाक बूढ़ा है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक है. तो अगर मैं इस पे जाऊं कि इसको झूठा साबित करूं तो ये गलत क्रॉस है. मैं उसके नज़र को कमज़ोर साबित करूं तो ये ठीक क्रॉस है. ठीक. तो मेरा फाइनल आर्गुमेंट जज के सामने ये होगा कि ये बेचारा तो इस काबिल नहीं था कि उसको पहचान लेते, इसने किसी दूसरे को देखा है और उस पर अपनी दानिश के मुताबिक अप्लाई कर रहा है. ठीक. ये मेरा फाइनल आर्गुमेंट होगा. तो मेरा क्रॉस भी इसी पे होगा. उसी आर्गुमेंट को मैं स्प्लिट करूंगा क्वेश्चन में. So I say that Baba sta retired professor है. Leading question. Yes. Sta the retirement. Sta umar चूँकि 78 काल है, नुस्ता the retirement 48 काल हो शू. Yes. Sta चश्मे हम लगे. Yes. ठीक शो करना. और खगटी चश्मे लगे. Yes. अगर वो पैसे ऊपर के लिए आई. कतौर तो दावे यार कम नंबर चश्मे लगे नॉन लीडिंग तलाड़े. अगर बात हो जैसे खुदा से डेर नरे मामूली लगो मा एक्सप्लेनेशन मौका दिवर तो अटला. ठीक शो करना. नो लीड नेवर डिस्ट्रॉय योर केस बाय क्वेश्चनिंग ऑन नॉन लीडिंग क्वेश्चन. ये साइंटिफिक चीज़ें हैं. और रशीदारी से खबर हो कि स्ट्रेट अवे बा आगे शीत नाराज़ी आगे तो वो ये बॉइलिंग अ फ्रॉग चिंदा खबा वो तो चिंदा खुद का और वाड़े नो ये चिंदा का खुद के नो दाबा खुद के दलू वो तो डायरेक्ट ना चाहे करना दाती वापस टूट गई. दाबा ये खूब होता हो चाहे रो बतल में नो बाजार न पूरी की जो बगर में शुरू आप की ज़्यादा कशी करना नो टाइम से शो पावन दिश फिनिश. ओके. तो ये बस कोई इस तरह चेनाइज मैंने इस तरह नहीं किया कि ये ट्रेनिंग नहीं था और 2 घंटों में बस इस तरह इंट्रोडक्टरी चीज़ें हो सकती थी. तो कैबिनेट ने इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये सिलसिला जारी रहे. तो फिर इंशाल्लाह हम इंटरेक्टिव सेशंस रखेंगे, मॉक ट्रायल्स रखेंगे. मैं आपको रीडिंग मटेरियल्स भी दूंगा. मेरे पास एक किताब है, इंतहाई मशहूर किताब है, द डेविल्स एडवोकेट. वो और छोटी सी किताब है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. आप अपने लिए उससे फ़ोटो कापी लेंगे, क्योंकि आप इस तरह पायरेसी करेंगे उसकी, तो आप इस तरह ख़रीदेंगे तो इंतहाई एक्सपेंसिव है. बाहर ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन है और इंतहाई मजाक की शक्ल में वो समझाता है इन चीज़ों को. और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह
इस पे प्रॉपर मॉक ट्रायल रखेंगे. मैं आपको प्रायर रीडिंग मटेरियल 2 दिन पहले दे दूँगा कि आप एक साइड पे पूरी टीम होगी डिफेंस की, दूसरी साइड होगी प्रोसिक्यूशन की, एक जज होगा, एक विटनेस होगा, और फिर हम एवेलुएट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन गलती कर रहा है. ठीक है इंशाल्लाह. तो जल्दी न किया करें बस, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो लर्निंग तो होती है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.